नमस्कार फ्रेंड, आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह होंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि एसबीआई पेंशन मैटर में 14 जून को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के इंस्ट्रक्शन पे, डायरेक्शन पे एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में जो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी जो था, उसका जो एक पॉइंट था वो था टू एग्जामिन view the extent concept of payment of pension at the rate of 50% and 40%। और वो केस 6/10 को दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था, लेकिन पुनः फिर 7/11 के लिए एडजॉर्न हो गया ताकि जो कमेटी का फाइनल रिपोर्ट अभी कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ था। और इस संबंध में ऐसी भी खबरें फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप पे कि एसबीआई पेंशनर के लिए जो स्पेसिफिक 40 to 50% का जो मसला है, इशूज है, उसके बारे में ये बहुत ही चर्चा चल रही है। उस बारे में कॉमरेड उमेश शर्मा जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया। Issue of SBI specific 40 to 50%. Several messages have been received beside post of doubters from Facebook etc. that 50% would be denied in view of this and that. I request you all to please ignore such messages and relax and try to understand. Payment of family pension at 3 different rates, 15, 20 and 30% was discriminatory and created 3 different class categories among family pensioner since corrected and now will get 30% uniform. Payment of DA and different rate was discriminatory, which also created different categories of recipients among pensioners and now corrected. Similarly, payment of pension at 2 different rates is discriminatory as it also created 2 different categories. All such acts are violation of Article 14 of Constitution, which guarantees non-discriminatory treatment to the similarly placed people, and Supreme Court order in DS Nakara versus Union of India, which had laid down that the pensioner, irrespective of date of retirement from same class of pensioners and to pay them differently is a discriminatory. Also there in section 50 clause 4 SBI Act 955, which protects the existing benefits, thus places check on the powers of the rule making authority. Since government and bank have agreed in principle to do away the discriminatory rules regulations, this 40% would be removed and 50% would be restored, and hopefully with retrospective effect. If not, then Honorable High Court would deliver the justice about issue of pension updation. Await what happens tomorrow in Supreme Court in PNB case. It is a matter of another month or so that we would get this as well. Please stay connected, stay positive. थैंक्स एंड रिगार्ड उमेश शर्मा। 9 तारीख का ये मैसेज है। यानी कि हमारे कॉमरेड उमेश शर्मा जी ने इस बात को आश्वस्त किया है कि इस आधार पे, डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया के आधार पे एसबीआई में जो ये इशू 40% एंड 50% पेंशन मैटर है, ये जरूर डिसाइड होगा और पेंशनर के फेवरेबल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।